This video shows how you can temporarily fix and use a hydraulic movable scissor lift in one place. First, fix all the outriggers to the ground, as shown in the video, so the scissor lift stays steady and doesn't move while working. The outriggers will become on both sides. After fixing the outriggers, the lift stays a bit higher from the ground. If you want to use this lift for vehicle loading and unloading, you'll also need to purchase a ramp. As shown in the video, we are using a ramp to move the vehicle onto the lift, so it's easier to understand how it can be used when needed. After placing the vehicle on the lift, you can remove the ramp, as shown in the video. After removing the ramp and fix the outriggers, you can use the scissor lift, as shown in the video. The lift operates with a hydraulic system, providing stable and smooth lifting for vehicles or materials. In the scissor lift comes with a built-in system that allows you to adjust the down speed as per your requirement. ये 4 वायर, ये आर वाई बी, ये जो येलो और ग्रीन है ये न्यूट्रल है। येलो और ग्रीन न्यूट्रल है, बाकी ये येलो, ब्लू और रेड ये आर वाई बी है। ये येलो कलर का जो है ये डाउन के लिए दिया गया है और ये ब्लैक कलर का है वो अप के लिए दिया गया है। मोटर का डायरेक्शन है, ये मोटर क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। क्लॉकवाइज घूमेगा तभी ये लिफ्ट स्टार्ट होगा, तभी ये ऊपर उठेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये लिफ्ट नहीं चालू होगी। ये 5 ओम का एलएमसी है, अगर डाउन का स्पीड बढ़ाना होगा तो इसको लूज करना पड़ेगा। इस एलएमसी को डाउन का स्पीड बढ़ाना है तो ऑयल का लेवल गेज है, यहाँ पे देखने के लिए होगा तो यहाँ पे दिखेगा, वो ऑयल फिर डालना है, लेवल इसका कम होगा।